Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 9 for the subject of Introduction to Information Technology. In this lecture, I am going to discuss basic concepts about number systems. Now, what are the objectives of this lecture? In this lecture, we will discuss that what is a number system. We will discuss the importance of number system. We will also discuss the use of number systems in our daily life and specifically in computers. And at the end of this lecture, I will discuss different types of number systems. So, what is a number system? A system that is used for writing to express numbers is known as a number system. Now, for example, when we say 100, to express 100, we write 100 on screen or on a calculator or on mobile phone. Now, we are using some digits to express the quantity. This is 100. Similarly, when we say 2003, we write 200 and 3. So, we are actually using a system to represent numbers or values. Number system is the mathematical notation for representing numbers given by using set of digits and other symbols in a consistent manner. सो बेसिकली नंबर सिस्टम क्या है? ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है. नंबर्स हमारे पास होते हैं मैथमेटिक्स में. सो आप कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम में हमारे पास एक सेट है. इस सेट में हमारे पास क्या है? डिजिट्स हैं. नाउ दीज डिजिट्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस क्वांटिटीज. वी कैन यूज other symbols like bracket or like another symbol known as base. I will discuss this term base in the later slides. So basically a number system जो है वो एक mathematical notation है जो किसी भी नंबर और किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिजिट्स यूज़ करते हैं और अदर स्पेशल सिम्बल्स यूज़ करते हैं. Now, a number system provides a unique representation of every number. Now, by unique representation we mean that 100 will always be written as 100. We cannot say that this is also 100. We cannot say that this is 100. But 100 has a unique representation, and that is 1 followed by 2 zeros. Similarly, minus 10 has this representation. There is no other representation of minus 10. Now you will see that I have used 2 digits and a special symbol for representing a number. So every number in a number system or every quantity defined by the number system has a unique representation. We can perform different arithmetic operations on the number systems as well. We can perform addition, subtraction, multiplication and division. अब ये चीज़ हम अपनी डेली लाइफ में बहुत दफ़ा करते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास पॉकेट में 5000 रुपीज़ हैं और हम मार्केट जाते हैं और कोई चीज़ परचेज़ करते हैं ₹1000 की, तो हम देखते हैं कि हमारे पास पॉकेट में 4000 रह जाता. सो व्हाट इज़ दिस? इट इज़ बेसिकली सिंपल सब्ट्रैक्शन. सिमिलरली हमारी पॉकेट में 5000 है, हम एटीएम पर जाते हैं, 1000 विदड्रॉ कर लेते हैं, हमारी पॉकेट में कितने पैसे आ जाते हैं? 6000. नाउ दिस इज सिंपल एडिशन. सिमिलरली वी यूज टू लर्न टेबल्स. These tables are simple multiplication. Similarly, we have rupees 10,000
and we are 5 people and we want to calculate the share of a single person, what we will do? We will simply divide 10,000 by 5 and we will get 2,000. So, these are the simple operations that can be performed on different quantities defined by the number system. Now, let us have a look at the formal definition of a number system. A number system is a set of values used to represent different quantities. For example, the quantities in our everyday life are represented by one of these numbers or using any combination of these numbers. Whether we are talking about money, or we are talking about the price of a mobile phone, or we are talking about a phone number, or we are talking about the temperature, we are using some digits from these or from this set. So, this is basically a number system. Now, a number system has different digits. So, the value of any digit is determined by the digit itself and the position and the base. For example, we have 100. Now, the digit at the rightmost location is 0, its value is also 0. The digit at the second place is 0, its value is 0, but the digit at the left place is 1. So, this makes it a 100. So, this is the positioning of different digits. Similarly, we have a base that I will talk about in coming slides. Now, what are the different examples of number system? We can use a number system to represent number of students in a class. Similarly, a number system can be used to find out the number of viewers watching a certain TV program. We can use the number system to define the currency value like USD, like pounds, like PKR. Similarly, we can use the number system to describe the marks or CGPA of a student. We can use the number system to quantify the temperature and weight. We can describe the price of anything using number system. And there are a lot of applications of number system in the computers. Now, this slide contains details about computers and number system. First of all, number systems are the technique used to represent numbers in the computer system architecture. Basically, our computers are digital computer. So, these computers work on digits. Now, what are these digits? A digital computer works on two discrete digits, and these are ones and zero. You can call these binary digits, or you can say that bit. So, a digital computer has electronic circuits. These electronic circuits contain different logic gates. Sometimes the circuit is open, while at other times the circuit is closed. The digit 1 indicates open circuit, the digit 0 indicates closed circuit. So, the working of a digital computer is totally dependent upon these two digits. So, whenever we are talking about digits, we are talking about the number system. So, our computers are using a number system to perform different operations. So, the number system is the basic part of computer system architecture. Now, which number system computers are using? Because we have two digits which are known as binary digits. So, computers are using binary number system for storing the data, for performing calculations, and for representing different things.
A digital computer contains different type of data. These are different types of data. We have numeric data, we have text data, we have image data, audio data and video data. Now let's have a look at the numeric data. Numeric data comprises of numbers. You can have two types in it. One is integer data, integer numbers, or known as whole numbers. Now what are whole numbers? 0 is a whole number, 1, 2, similarly 3 and so on. Similarly -1, -2, -3 are all whole numbers. So integer numbers are representing using a number system. Similarly we have decimal numbers or floating point numbers. अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में हमारे पास डेसिमल पॉइंट होता है, जैसे 2.3, जैसे 3.1415, जैसे 0.00027, सिमिलरली -0.0006565. सो हम नंबर्स को नो डाउट कंप्यूटर स्क्रीन पर इस फॉर्म में देख रहे हैं. ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है. दिस इज ऑल्सो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म. बट हाउ द कंप्यूटर्स विल स्टोर दिस नंबर्स? Computers will store these numbers in binary format, in a number system format adopted by computers. Similarly, we have alphabetic data. Alphabetic data contains alphabets of any language. We can have English language, we can have Chinese language, we can have Arabic language, we can have Urdu language and many other languages. But commonly computers are using English alphabets. So alphabetic data contains data from capital A to capital Z and small a to small z. हमें ये डाटा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नज़र आ रहा है. Like this is capital A, this is capital Z, this is small a, this is small z. But computers are not understanding these characters in this way. Computers again use the number system to understand these characters. For example, जैसे मैं की S प्रेस करता हूँ तो कंप्यूटर यहाँ पर S लिख देता है, लेकिन कंप्यूटर ने कैसे अंडरस्टैंड किया कि मैंने S की प्रेस की? उसके लिए एक टेक्निक यूज़ होती है जिसे हम ASCII कोड कहते हैं. इस टेक्निक को हम लेटर इन कमिंग वीक में देखेंगे कि ASCII कोड क्या चीज़ है. अभी के लिए आप ये जहन में रखें कि अल्फ़ाबेटिक डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर ASCII कोड को यूज़ करता है और ASCII कोड बेसिकली नंबर्स पे ही बेस करता है, और जहाँ पर बात नंबर्स की है वो एक नंबर सिस्टम है. नेक्स्ट वी हैव टेक्स्ट डाटा. Text data is actually alphanumeric data. Now alphanumeric data contains digits, alphanumeric data contains alphabets, and alphanumeric data can contain special symbols. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ abc@gmail.com. अब इसमें अल्फ़ाबेट भी हैं और एट और डॉट स्पेशल सिम्बल्स भी हैं, तो ये अल्फ़ानुमेरिक है. इसी तरह मैं लिखूँ abc123@gmail.com. दिस इज़ ऑल्सो अल्फ़ानुमेरिक. मैं लिखूँ abc@gmail.com. दिस इज़ ऑल्सो अल्फ़ानुमेरिक. मैं लिखूँ abc123, दिस इज़ ऑल्सो अल्फ़ानुमेरिक. लेकिन अगर मैं लिखूँ abc@gmail.com, ये अल्फ़ाबेटिक, क्योंकि इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हैं. तो जब डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर नंबर सिस्टम यूज़ कर रहा है, अल्फ़ाबेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ASCII कोड यूज़ कर रहा है, इसी तरह स्पेशल सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ASCII कोड यूज़ कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि इन डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए कंप्यूटर नंबर सिस्टम्स को यूज़ करता है. नेक्स्ट वी हैव इमेज डाटा. इमेज or picture.
Now what is an image? An image is composed of tiny dots known as pixels और pal. कोई भी इमेज जो है वो हमें नो डाउट स्मूथ नज़र आ रही है, लेकिन एक इमेज जो है वो स्मॉल डॉट से मिलके बनती है और हर डॉट को हम पिक्सल कहते हैं या पेल कहते हैं. पेल का मीनिंग है पिक्चर एलिमेंट. जैसे फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है, मैं इसको जूम करता हूँ. आप किसी भी पिक्चर को जूम करें तो आपको स्मॉल बॉक्सेस नज़र आने स्टार्ट हो जाएंगे. हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि पिक्चर डिस्टॉर्ट होगी, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रही, लेकिन एक्चुअली हर पिक्चर में ये डॉट्स हैं और ये डॉट्स क्या चीज़ें हैं, ये बेसिकली पिक्सल है. और अगर आप इसको गौर करें तो हर बॉक्स में सिंगल कलर है. सो एक पिक्सल में क्या है, पिक्सल कंटेन्स वैल्यूज़. किस चीज़ की वैल्यूज़? कलर वैल्यूज़. हर पिक्सल का एक स्पेसिफिक कलर है और हर कलर की कोई ना कोई वैल्यू है. अब कलर वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक मॉडल यूज़ करते हैं जिसे हम RGB मॉडल कहते हैं. इसमें पहला पोर्शन रेड कलर है, दूसरा ग्रीन कलर है, तीसरा ब्लू कलर है. लाइक if I write RGB 161, 241 and 15, this will create a color containing 161 units of red color, 241 units of green color and 15 units of blue color. So this will create a color. तो हर कलर को रिप्रेजेंट किया जाता है उसकी वैल्यू से, और ये वैल्यू कहाँ स्टोर होती है? पिक्सल में. तो आप कह सकते हैं कि एक इमेज पिक्सल से मिलकर बनती है. पिक्सल क्या चीज़ है? पिक्चर एलिमेंट है. एक डॉट है, उस डॉट में क्या है? कलर है. हर कलर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. वैल्यू में क्या यूज़ करते हैं? डिजिट्स यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ बेसिकली नंबर सिस्टम. सो पिक्चर्स आर आल्सो यूजिंग नंबर सिस्टम टू रिप्रेजेंट कलर वैल्यूज़. बेसिकली हमारी जो पिक्चर है उसकी लेआउट एक मैट्रिक्स की तरह की है. फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स किस तरह से होता है? हमारे पास एक मैट्रिक्स में रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने मैट्रिक्स की नोटेशन ड्रॉ कर ली और मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास 10 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर हमारे पास 30 है, फिर मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास 11 है, फिर मैं कह देता हूँ यहाँ पर 21 है, यहाँ पर हमारे पास 31 है, इसी तरह यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 31 है और यहाँ पर मैं कह देता हूँ 41 है. सो दिस इज़ बेसिकली ए मैट्रिक्स. मैट्रिक्स 2 डायमेंशन है, इसमें रोज़ भी हैं और इसमें कॉलम्स भी हैं, और एक इंटरसेक्शन जो है रो और कॉलम का, ये जो इंटरसेक्शन है ये एक्चुअली एक पिक्सल है. ये पॉइंट जो है ये एक्चुअली एक पिक्सल है. तो इसमें भी कोई ना कोई वैल्यू है. तो इसी तरह हमारी इमेजेस जो है वो भी मैट्रिक्स हैं. अगर हम देखें इसकी डिटेल्स में जाके तो हमें नज़र आएगा 568 by 635. इट मीन्स it has a horizontal width and a vertical height. It means it is also in 2 dimensions. So this is the basic layout of a picture. Next we have audio data. अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था ऑडासिटी सॉफ्टवेयर. ये ऑडासिटी सॉफ्टवेयर है, इसमें मैंने एक ऑडियो ओपन की है. तो अगर आप देखें तो ये ऑडियो आपको एक वेव फॉर्म में नज़र आ रही. हर एक की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है. ये साइड्स पर आपको फ्रीक्वेंसीज नज़र आ रही. हर वेव का कोई एम्पलीट्यूड है, कोई फ्रीक्वेंसी है. सो बेसिकली हर ऑडियो को भी हम रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर्स को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एम्पलीट्यूड की भी वैल्यू और फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू है. फॉर एग्जांपल लुक एट दिस. ये आपको एम्पलीट्यूड नज़र आ रहा है
और फिर इसकी फ्रीक्वेंसीज जो कि डिस्क्रीट वैल्यूज, इनको हम नंबर्स से रिप्रेजेंट करते हैं. सो बेसिकली एन ऑडियो इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड यूजिंग नंबर सिस्टम. नेक्स्ट वी हैव वीडियो. नाउ व्हाट इज ए वीडियो? First of all, video contains images and audio. Now images are represented in the form of number systems. Audio is also represented in the form of number systems. So a video can also be stored and represented using the number systems. No doubt ये सारा डाटा हमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में या ह्यूमन हियरेबल फॉर्म में या अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में मिलता है, लेकिन कंप्यूटर्स इसको अपने खुद के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं. और कंप्यूटर्स का फॉर्मेट क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम, क्योंकि कंप्यूटर 0 एंड 1 पे बेस करते हैं. नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम. द फर्स्ट वन इज बाइनरी, द सेकंड वन इज डेसिमल, थर्ड वन इज ऑक्टल एंड द फोर्थ वन इज हेक्साडेसिमल. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज नंबर सिस्टम्स? There is only one thing that describes the difference between all these number systems, and this thing is base or radix. A base defines the total number of digits that you can use to represent any number in a number system. For example, we have a number system that has a base 5. It means we will use a total of 5 digits for representing any quantity. Similarly, if we have a radix value 20, we can say that we have 20 digits for representing different numbers or values. So the base is always written as subscript. अब हम देखते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है. बाइनरी वर्ड का मीनिंग है 2. So the base of binary number system is 2. Or the radix of the number system is 2. So it means we will have 2 discrete digits and we will use both these digits to represent any quantity. So a binary number system contains 2 digits 0 and 1. All other numbers are formed by combining these quantities. For example, it is a binary number. This is also a binary number. It is also a binary number, but this one is not binary because there is no digit such as 2 in the binary number system. Binary number system में 0 और 1 के अलावा कोई और digit है ही नहीं. So every number value represents with 0 and 1 in this number system, and we can combine these 2 digits to represent different quantities. Now each digit is known as bit. Bit stand for binary digit. So 0 is a bit and 1 is also a bit. In this number we have used 3 digits. So it means it is a 3-bit number. In this number we have used 6 bits. So it is a 6-bit number. Similarly, you can count the number of bits of this number, so you will get the number of bits in this number system or in this value. ये बाइनरी नंबर सिस्टम की कुछ एग्जांपल्स हैं. वैलिड एग्जांपल, इट इज़ आल्सो वैलिड. ये वैलिड नहीं है. क्यों? क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में ना तो 2 कोई डिजिट है और ना ही 5 कोई डिजिट है, इसलिए ये रॉन्ग है. इसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम में आप माइनस साइन नहीं यूज़ कर सकते. नो डाउट हमारे पास न्यूमेरिक डाटा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होते हैं, लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम में हम नेगेटिव साइन से नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करते. इसके लिए एक स्पेशल टेक्निक यूज़ होती है जो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे. उस टेक्निक को हम कहते हैं 2's complement. So to represent negative numbers in the binary number system, we will use 2's complement technique. We will discuss this technique later. Next we have decimal number system. The base of decimal number system is 10
So it will contain a total of 10 digits. So we will have digits from 0 to 9, and we will use any combination of these digits to represent any numeric value. For example, we have decimal number system. The number of digits allowed is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are the digits allowed in the decimal number system. अब हम इनके कोई भी कम्बिनेशन बना लें, उससे कोई भी नंबर बन सकता है. और अगर आप नोट करें तो आपके कीबोर्ड पे जो कीज़ हैं उनमें भी सिर्फ यही डिजिट्स हैं. आपके मोबाइल फ़ोन में जो न्यूमेरिक कीपैड है उनमें भी सिर्फ यही डिजिट्स हैं. सो इट मीन्स कि हम अपनी डेली लाइफ में डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं. कैलकुलेटर पर भी यही डिजिट्स हैं. अगर हमने 2043 लिखना है हम सिंपली ऐसे लिख देते हैं. हमने 5660 लिखना है हम इसको ऐसे लिख देते हैं. सो जितने भी हम वैल्यूज़ या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बनाएंगे वो हम इन डिजिट्स को कंबाइन करके बनाएंगे. ये डेसिमल नंबर सिस्टम, और ये वाइडली यूज़ है. इसको हम करेंसी के लिए, नंबर्स के लिए, जीपीए के लिए और डेली लाइफ में जितने भी काम हैं उन सब को क्वांटिफाई करने के लिए हम डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं. डेसिमल नंबर सिस्टम में पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स दोनों हैं. अगर मैं किसी क्वांटिटी के साथ हाइफन लगा दूं तो ये नेगेटिव क्वांटिटी. लेकिन अगर किसी क्वांटिटी के साथ मैंने कोई भी साइन नहीं लगाया तो हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं. लेकिन अगर हम पॉजिटिव साइन लगा दें तो ये बेटर है. उसकी वजह क्या है? बिकॉज इफ़ यू राइट सिंपल 2043 it is considered as unsigned number. It is neither positive nor negative, but in our daily life we treat the unsigned number as positive number, but in computers we have to define the sign explicitly, otherwise computer will consider this as an unsigned number. We will discuss the difference between the signed and unsigned number and the representation in the later coming lectures. Here are some examples of decimal number system. Now, is this a valid decimal number system? Yes, it is valid. Although we are using only two digits 1 and 0, but the base is 10 and the decimal number system also has these two digits. And secondly, we are using the sign minus, which is allowed in डेसिमल नंबर सिस्टम. तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये पॉसिबल है. नेक्स्ट वी हैव ऑक्टल नंबर सिस्टम. द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8, सो द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन दिस सिस्टम आर 8. सो वी कैन यूज एनी डिजिट फ्रॉम 0 to 7. नाउ दिस इज द ऑक्टल नंबर सिस्टम. You will not have any 8 or 9 in it. You will have a total of 8 digits ranging from 0 to 7. Now this is a valid octal number because values in an octal number system are formed by combining different digits from this set. Is this a valid octal number? ये वैलिड ऑक्टल नंबर नहीं है. क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि इसमें हमने एक डिजिट यूज़ किया 8, जो डेसिमल नंबर सिस्टम में तो अलाउड है लेकिन ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये वैलिड वैल्यू नहीं है. सो 8 से लेस जितने भी डिजिट्स हैं वो परमिसिबल है. ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन उनको रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या है वो हम फ्यूचर लेक्चर्स में देखेंगे. अभी के लिए आप सिर्फ ये माइंड में रखें कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नंबर दोनों सेम उसी तरह रिप्रेजेंट होते हैं जैसे डेसिमल में हो रहा है. 7 एंड 07 में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल लाइफ में देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन 7 एंड 07, बट इन कंप्यूटर्स 7 is considered
in decimal number system, while 07 is considered octal in nature. So this is the difference between 7 and 07. तो कंप्यूटर में जब भी आप 07 या 05 या 04 लिखेंगे, उसको डेसिमल का 4 नहीं समझा जाएगा, उसको ऑक्टल का 4 समझा जाएगा. Here are some examples of octal number system. Now this is a valid octal number, although we are using ones and zeros only, but ones and zeros are allowed in octal number system too. So this is valid. This is an invalid octal number. Why? Because we are using a digit 8, while all other digits are completely good. Next we have the hexadecimal number system. The hexadecimal number system has 16 base. So we have a total of 16 discrete values. Now what are these values? These values are 0 to 9 and 10 to 50. But to overcome inconsistency, we will say that 10 is equal to A, so we will replace 10 by A. We will say B is equal to 11, so we will replace 11 by B. We will say C is equal to 12, so we will replace 12 by C. Similarly, we will say D is equal to 13, so we will replace 13 by D. We will say E is equal to 14, we will replace 14 by E. Similarly, we have F is equal to 15, so we will replace 15 by F. So you can say that the hexadecimal number system has 16 discrete values. We have 10 digits from 0 to 9 and 6 symbols from A to F, with each symbol has a corresponding value. So we can form any value or any quantity using the combination of these set of values. For example, 2FD, it is the hexadecimal number. 25A, hexadecimal number. Similarly, ABA2 is a hexadecimal number. Here are some examples of hexadecimal number. For the timing, आप ये सोच लें कि जिस तरह हमने डेसिमल में पॉजिटिव और नेगेटिव क्वांटिटीज़ रिप्रेजेंट की, इसी तरह हम हेक्साडेसिमल में भी क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब ये एक इनवैलिड हेक्साडेसिमल नंबर है. क्यों इनवैलिड है? क्योंकि इसमें हमने एक करैक्टर यूज़ किया जिसको हमने जी करैक्टर कह दिया, लेकिन हमारे पास हेक्साडेसिमल में जी करैक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता. So it is basically invalid hexadecimal value. So here is a comparison of different number systems. We have number system here. Here is the base of every number system. Here are the different digits that can be used to represent values in a number system. In the next lecture, we will start the interconversion of different number systems. We will convert decimal number system into binary, and decimal to octal, and decimal to hexadecimal, and vice versa.